Yes. Initially, we started with overview of cyber security. साइबर अटैक क्या है, सिस्टम बेस्ड अटैक क्या है, हार्डवेयर बेस्ड अटैक क्या है, पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, कितने टाइप्स के अटैक होते हैं. साइबर अटैक कैन बी अगेंस्ट अ पर्सन, साइबर अटैक कैन बी अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट. तो इट कैन बी अगेंस्ट पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट. ये तीन टाइप हम लोगों ने देखी. अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ vulnerabilities और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स the attacker can use. Now we are starting with our cyber forensic. Okay, after attack, what should be our objective and how to detect a crime? Yes, introduction to cyber forensic. Computer forensic is the application of investigation and analysis techniques to gather and preserve evidences. Gather and preserve. Collect करना और संभाल के रखना. Forensic examiners typically analyze data from personal computer, laptop, personal digital assistant, cell phone, server, tabs, and any other types of media. This process can involve anything from breaking encryption to executing search warrants with a law enforcement team. यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या पार्ट कवर हो रहे हैं साइबर फोरेंसिक में, और वी कैन से डिजिटल फोरेंसिक में. This process can involve anything from breaking encryption to executing search warrant. मतलब यहां पर they are dealing with the digital forensic domain people, they are dealing with some laws also. They can execute search warrant with a law enforcement team to recovering and analyzing files from hard drives that will be critical evidence in the most serious civil and criminal cases. ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, एंड नाउ वी आर फैमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्राइम्स नाउअडेज. ये बहुत ही कॉमन है. वन मोर इशू इज ऑफ साइबर क्राइम इज गोइंग ऑन. एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है कि एसएससी और एचएससी के एग्जाम्स ऑनलाइन ही होने चाहिए. दिस इज अ करंट ट्रेंडिंग न्यूज इन टुडे. नाउ ये जो क्राइम है, इफ यू विल सी एक्चुअल क्राइम is taken place on a social media like Instagram or Facebook or whatever medium of WhatsApp. लेकिन इसका इफेक्ट कहां पर आया? इसका इफेक्ट आया अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो नाउ दिस विल कम अंडर साइबर अटैक अगेंस्ट गवर्नमेंट. अब इसमें वापस एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है कि वेदर इट इज क्राइम और इट इज नॉट अ क्राइम. हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आवर what we say, what's our fundamental rights. So this is again one point of discussion, but now we are talking about in terms of digital forensic और cyber attack. तो यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक अगर हम उसको साइबर अटैक में कन्वर्ट करेंगे तो इन दैट केस whatever IPC section we have read 66A, 66B, 66C, A, B, C and D, 4 सेक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जहां पे हमने देखा था कि हाउ आईटी लॉ इज मर्ज विद इंडियन पेनल एक्ट. The forensic examination of computers and data storage media is complicated and highly specialized process. The results of forensic examinations are compiled and included in reports. In many cases, examiners testify to their findings where their skills and abilities are put to ultimate scrutiny. यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशलाइजेशन कोर्सेस and post-graduation courses of digital forensics are also available. One of the institute of Maharashtra government is also providing masters in digital forensics.
So this is a complete domain, and here why the domain is required here, see here, is a complicated and highly specialized process, क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंस की रिकवरी है और प्रिजर्वेंस है ये बहुत ही टेक्निकलिटी है. हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन इफ द सेल फोन इज ब्रेक और हार्ड डिस्क इज ब्रेक, और इसको कोई वाटर वगैरह या पानी वगैरह के अंदर किसी ने साइबर अटैकर ने पानी वगैरह के अंदर पुट कर दिया डिस्क को या मोबाइल फोन को, तो हाउ टू रिकवर द डेटा, how to find out the IMI number. All that is a part of a digital forensics. In many cases, examiners testify to their findings where their skills and abilities put to ultimate scrutiny. मतलब वो लेवल तक स्किल्स वहां पे डेवलप होनी चाहिए कि हम लोग वो लेवल पर वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सके. अब डिजिटल फॉरेंसिक इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, extraction and documentation of computer evidence which can be used by the court of law. Court of law में that things should be considered as a evidence. Number one. और वो एज अ एविडेंस कब कंसिडर होगी, when we provide a supporting documents to that evidence. At that time we will say yes it is a evidence for this crime. अगर उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं है, कोई लिंक ही अटैच नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम वी कांट से इट इज अ एविडेंस फॉर दिस क्राइम. तो वहां पे डिजिटल फॉरेंसिक में इफ आई एम सेइंग this device is used by the criminal, so what should be the evidence? The evidence should be any documents which is connecting with the criminal. कोई डॉक्यूमेंट जो उसकी तरफ उससे रिलेटेड हो और वही डॉक्यूमेंट का लिंक डिवाइस के साथ भी हो. इसीलिए whenever we are taking any private connection of internet in our home, or when we are taking any SIM card, the documents are required. And apart from these documents, the IP address and MAC address is also very important, and this will be considered as a evidence. It is a science of finding evidence from digital media. It is a science of finding evidence from digital media like computer, mobile phone, सर्वर और नेटवर्क. सर्वर और नेटवर्क, ये जो दो पार्ट यहाँ पे आ गए हैं, ये इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं प्रोसेस को, बिकॉज अटैकर्स यूजिंग अ टूल्स जहां पे उन लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड कर देते हैं. ये हम लोग ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा था, which type of tools and technique they use to hide their identity, how they keep network busy, how they use a buffer flow. It provides the forensic team with the best techniques and tools to solve complicated digital related cases. So this is the overall definition of digital forensic, कि यहाँ पे जो evidence है it is will be used by court of law, और यहाँ पर they are dealing with computer, mobile phones, servers or network, and they are occupied with latest technology and tools to solve the digital related cases. Digital forensic helps the forensic team to analyze, inspect, identifies, and preserve the digital evidence residing on various types of electronic devices. Digital forensic is a branch of forensic science that focuses on recovery and investigation of material found in digital devices related to cybercrime. अब यहाँ पे और डिटेल में है व्हाट इज कंप्यूटर फोरेंसिक्स और साइबर फोरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस में डिफरेंस क्या है और हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट.
Computer forensics is also important because it can save your organization money. From a technical standpoint, the main goal of computer forensic is to identify, collect, preserve, and analyze data in a way that preserves the integrity of evidence collected so it can be used effectively in a legal case. So what is the motto behind saving a data? Or we can say putting a boundaries which will stop the attackers. तो यहाँ पे हर चीज के पीछे मोटो ये होना चाहिए कि if crime happens at that time we are able to collect the evidence. पहला एम तो यही है कि क्राइम होना. We will put all our techniques and tools जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम different tools we will use to stop the crime. But if it happens at that time, we are able to find out the evidence. If we are having evidence, we can go into the court. And when we will go into the court, a penalties or punishment will come. And if penalties and punishment will come, it will be clear message for society, to those people, those who are thinking about to do a cyber attack. If punishment will not be there, attack will be more. तो यहाँ पे दो वे में काम करती है सोसाइटी. एक तो क्राइम होना, और अगर क्राइम होता है तो पनिशमेंट होनी चाहिए. अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो पीपल विल बी more motivated to do the crime. Digital evidence is information stored or transmitted in binary form that may be relied on in a court. It can be found on a computer hard drive, mobile phone, among other places. Digital evidence is commonly associated with electronic crime, e-crime, such as child pornography or credit card fraud. However, digital evidence is now used to prosecute all types of crime. यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 लाइन है वहां पे डिजिटल फॉरेंसिक को कुछ पर्टिकुलर क्राइम के साथ रिलेट किया गया था, लाइक ई क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम. हाउएवर, digital evidence is now used to prosecute all types of crime. और अभी फिलहाल nowadays we know that from the different social media platform, digital evidence is used for each type of crime now. हर जगह पे यूज होता है, not just e-crime. For example, suspects email or mobile phones files might contain critical evidence regarding their intent, their whereabouts at the time of crime, and their relationship with other suspects. अब उसको वहां पे भी यूज कर सकता है. कहाँ पे? In a normal crime, that someone is saying that I am not present on that day in Pune, suppose on 29th January. I was not present in January. So with the help of my mobile location, they will prove that you are present in Pune. If I am saying I don't know about the X person, but in my mobile, I am having a chat on WhatsApp or a personal chat or call with that X person, so this is a proof that I know that person. In 2005, for example, a floppy disk LED investigators to the BTK serial killer who had eluded police capture since 1974 and claimed the lives of at least 10 victims. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक केस को प्रेजेंट किया गया है जहां पर उसने 10 विक्टिम्स थे वहां पर. तो वहां पे 1974 का केस था, उसको फ्लॉपी डिस्क से कैसे सॉल्व किया गया, दैट इज मेंशन्ड हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. In an effort to fight e-crime, and to collect relevant digital evidence for all crimes, law enforcement agencies are incorporating the collection and analysis of digital evidence, also known as computer forensics, into their infrastructure. Law enforcement agencies are challenged by the need to train officers to collect digital evidence and keep up with rapidly evolving technologies such as computer operating systems.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Law enforcement agencies are challenged by the need to train officers to collect digital evidence and keep up with rapidly evolving technologies such as computer operating systems. Because we know the cyber attackers always, every day, come up with a new technology or come up with a new technique or come up with a new scam plan. So in that case, that training is also very important. इसलिए हम लोग घड़ी घड़ी सोशल मीडिया में देखते हैं कि दिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस गोज अंडर ट्रेनिंग बाय दिस ट्रेनर, दिस ऑर्गेनाइजेशन गोज अंडर ट्रेनिंग बाय दिस corporate trainer or this organization. This is another one domain, providing a training on a latest technology. अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे forensic analysis of email, very important. कैसे एनालिसिस होगी किसी ईमेल की? इफ ईमेल इज अ पार्ट ऑफ क्राइम, email forensics refers to the study of source and content of email as evidence to identify actual sender and recipient of message. कहां से आया है, कंटेंट क्या है, that can be used as a evidence, date, time of transmission, detailed record of email transaction, intent of sender, etc. This study involves investigation of metadata. Metadata means whatever background, all small information will be considered as a metadata. Keyword searching, port scanning for authorship attribution and identification of email scams. Email scam is also a very important nowadays and especially for fresh graduate. यहाँ पे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा क्योंकि अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे मैं सब लोग को आप लोग को स्ट्रेस करूंगा. But now because you are in the 6th semester and I think most of the people already registered with different portals of jobs. बहुत लोग आप लोगों ने different job portal से register कर लिया रहेगा. Now remember important thing. Once you registered with this different portals of jobs, actually you are providing your contact details, your address and your email address. And from here the cyber attacks starts. आपने points दे दिया, sources अपनी information दे दिया. Now they know a particular person, a particular student having this skill and he is eagerly searching for this type of job. तो ये बहुत आप लोगों को इस रिगार्डिंग कॉल्स और ईमेल्स आना स्टार्ट हो गए होंगे शायद, और दे विल कम इन नेक्स्ट ईयर. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, और आफ्टर गेटिंग एन ईमेल you have to search whether this email is authentic or not. Every week I am getting 1 or 2 calls from the students of pass out students or final year students. हर हफ्ते मुझे 1 से 2 कॉल ऐसे आ ही रहे हैं. And it's very good. You have to connect with someone. आपको किसी के साथ कनेक्ट होना ही होगा. सर्च तो खुद करना ही है और किसी से कनेक्ट होना है. आपको डायरेक्टली ये भी नहीं कहना है कि यस ये फेक मेल है या ये तो स्कैम है, ऐसा भी नहीं है. आइडेंटिफाई इट. कुछ कुछ ईमेल ऐसे होते हैं कि आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो कि यस इट्स अ फेक मेल. सपोज यू आर गेटिंग एन ईमेल फ्रॉम इंडियन आर्मी दैट वी गो थ्रू योर प्रोफाइल एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड. नाउ यू हैव टू रजिस्टर. द रजिस्ट्रेशन इज अमाउंट इज 2500 एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर अ फाइनल फेस टू फेस इंटरव्यू. तो ये फेक ईमेल है. ये आप लोग को समझ में आ जाएगा पढ़ के, कैसा हो नहीं सकता, मैंने कोई टेस्ट ही नहीं दिया.
मैंने कोई फिजिकल राउंड ही क्लियर नहीं किया, कोई स्टेज 1 स्टेज 2 की प्रोसेसिंग ही नहीं, हाउ आई एम गेटिंग अ डायरेक्टली कॉल फॉर इंटरव्यू. Sometime they will say they are providing online training also, and after completion of 3 months training they will provide you job assistance. अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको स्कैम कह सकते हैं. देयर मे बी ए स्मॉल स्टार्टअप, अ इंडिविजुअल ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप. ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है उसको डायरेक्ट हम लोग फेक कह सकते. बट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, whatever website or name is provided, you have to go and search it. Search it through Google, search it through LinkedIn, search it through different portal where company registration is there, website registration is there, where you will know that this is authenticate or not. You have to connect with the previous student or previous employee of that organization and talk with them that ऐसी कोई organization है क्या, आपका experience क्या था, आपने ट्रेनिंग लिए वहां से तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड किया, क्या क्या ये जो फीस ले रहे हैं ये वर्थ है कि नहीं है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड विद समवन. किसी के साथ तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेरियस अप्रोचेस दैट आर यूज फॉर ईमेल फॉरेंसिक्स आर. अब आ जाते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ कि कौन कौन से अप्रोचेस लिए जाते हैं ईमेल फॉरेंसिक्स में. हेडर एनालिसिस, metadata in the email message in the form of control information, that is envelope and headers, including headers in the message body contain information about the sender or the path along which the message has traversed. Some of these may be spoofed to conceal the identity of the senders. See here. डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स को लेकर यहाँ पे अटैकर इंफॉर्मेशन को हाइड भी कर सकता है. अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस हेडर एंड देयर कोरिलेशन इज परफॉर्म इन हेडर एनालिसिस. अब इसकी जो एनालिसिस है वो यहाँ पे की जाती है, कहाँ पर, हेडर एनालिसिस में. अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेसमेंट कुछ पुट करना चाहूंगा. यस, ऑल आर विथ मी? यस सर. हाँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हट जाता हूँ, थोड़ा इसको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में इंक्लूड कर देता हूँ. ईमेल का रिगार्डिंग है. whenever an email come or a simple message come or you're getting a message on LinkedIn or wherever, please find out that that person is having a professional email ID. Suppose my email ID is siraj.patan@aiktc.ac.in. So if I am talking with someone related with academics and that person doesn't know me, मैं unknown हूँ उसके लिए और मैं उसके अप्रोच कर रहा हूँ किसी के पास, सपोज वन एक्सपर्ट फ्रॉम साइबर इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, और मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ कि मुझे एक प्रोग्राम करना है, बच्चों के लिए वेबिनार लेना है, सर आर यू इंटरेस्टेड, यू विल टेक इट और नॉट, टाइम क्या रहेगा फिजिबल. तो इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू यूज एन ऑफिशियल ईमेल आईडी. तो एट दैट टाइम ही विल गेट ट्रस्ट ऑन मी, उसका ट्रस्ट आएगा. आई कैन यूज माई पर्सनल ईमेल आईडी ऑल्सो, बट इन दैट केस there is a less chances he will get the trust. उसको ट्रस्ट है या उसको यकीन है, इसके बहुत ही कम चांसेस रहेंगे. तो सिमिलरली अगर आप लोग जब अप्लाई कर रहे हो, आप किसी पोस्ट से जा रहे हो, तो ट्राई टू चेक दैट पर्सन इज हैविंग एन ऑफिशियल मेल आईडी. ये एक पार्ट है, ये ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% ट्रू ही है, 100% सही है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा. और अगर ऐसा ईमेल आईडी नहीं है तो ट्राई टू अवॉइड सेंडिंग योर पर्सनल डॉक्यूमेंट. सीवी सेंड कर दिए, इनफ है. पर्सनल ईमेल आईडी किसी ने दिया है और कहा है कि यस आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, जस्ट सेंड अ सीवी. बट यू आर सेंडिंग एवरीथिंग ऑन दैट ईमेल आईडी, इट्स नॉट गुड. आप वहां पे अपने आधार भी भेज रहे हो, अपने एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, इंजीनियरिंग की मार्कशीट भी भेज रहे हो. नो, इट्स नॉट ट्रू. ये बराबर करेक्ट नहीं है.
पहले ही क्लियर कर रहा हूं मैं. Just send your CV, do a chat, do a small meeting, do a physical meet in office, go and find out. Then, if they are asking for document verification, please tell them you are having any system where I have to upload it. Please provide me link. नहीं है तो स्कैन कॉपी प्रॉपर एचआर के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे अगर लोग कहते तो एचआर के प्रोफेशनल प्रॉपर ईमेल आईडी ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी पर सेंड करो. ये चीजों पे ध्यान दो. बहुत बार मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा हो कि दे आर प्रोवाइडिंग रैंडमली देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू एनीवन. क्यों इतना घाई में नहीं आना आप लोग को, ऐसा कुछ भी मत करो. ये सब चीजों को ध्यान दो. वन मोर थिंग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ पे भी रजिस्टर कर रहे हैं. नो नीड. अगर वो आप लोग को ऑथेंटिकेट नहीं लग रहा है, प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो डोंट रजिस्टर दैट. कोई जरूरत नहीं है सब जगह रजिस्टर करने की. वन और टू पोर्टल इज इनफ टू फाइंड फॉर इंटर्नशिप जॉब्स. वन और टू पोर्टल्स आर इनफ. वन से टू पोर्टल में काम हो जाता है, उससे ज्यादा की हम लोग को जरूरत नहीं है. यस. बैड टैक्टिक्स. इन बैड टैक्टिक इन्वेस्टिगेशन an email with http://image src tag having image source at some computer monitored by the investigators is sent to the sender of email under investigation containing real email address. When the email is opened, a log entry containing the IP address of recipient is recorded on the HTTP server hosting the image, and thus sender is tracked. This is a bad tactic where you are able to track a sender. The portion I highlighted in blue. 1 minute. 1 minute. Yes. So this is a bad tactic where with the help of image we are able to record or track the sender of an email. However, if the recipient is using a proxy server, then IP address of proxy server is recorded. The log on proxy server can be used to track the sender of email under investigation. If the proxy server's log is unavailable due to some reason, then investigator may send a tactic email. Number A, embedded Java applet that runs on receiver's computer, or HTML page with ActiveX object, both aiming to extract IP address of the receiver's computer and email it to the investigator. तो यहाँ पे हम लोग ने जो देखे बैड टैक्टिक में क्या देखे कि दो तरीके हैं. या तो इमेज सेंड करके ट्रैक करो, या अगर वो प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर. इफ लॉग इज अनअवेलेबल एट दैट टाइम वी हैव टू डू टू मोर टेक्निक जो यहाँ पे रिफर की गई है, सजेस्ट की गई है. एम्बेडेड जावा एप्लेट that runs on receiver's computer, or HTML page with ActiveX object. Next is server investigation. So header analysis, bad tactics, and server investigation. In this investigation, copies of delivered emails and server logs are investigated to identify source of an email message. Emails purged from
Emails purged from the clients whose recovery is impossible may be requested from servers. Emails purged from the client, sender or receiver whose recovery is impossible may be requested from the server. मतलब यहाँ पे हम लोग सर्वर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं to resend the email, as most of them store a copy of all emails after their deliveries. एक कॉपी वहां पर सर्वर में होती है proxy. Further, logs maintained by servers can be studied to trace the address of the computer responsible for making the email transaction. इसीलिए हम लोग जब भी साइबर कैफे वगैरह में जाते हैं तो वहां पे डिटेल एंट्री होती है. However, servers store the copies of email and server logs only for some limited periods and some may not cooperate with the investigator. यहाँ पे problems भी आ सकती है. Some computers not store or they are storing for it a limited time. Further, SMTP, mail transfer protocol server, which stores data like credit card number and other data pertaining to the owner of mailbox, can be used to identify person behind an email address. SMTP protocol, which you are going to study in CCN, जो आपने पढ़ भी लिया रहेगा अभी तक मॉड्यूल 2-3 में. So that can be used. This comes under server investigation. Next is network device investigation. In this form of email investigation, logs maintained by the network devices such as router, firewall, and switches are used to investigate the source of an email message. एक ईमेल में कितने पार्ट है देखो ईमेल आइडेंटिफिकेशन में. हेडर की एनालिसिस है. हेडर की एनालिसिस के बाद हमने क्या देखा? बैड टैक्टिक्स टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस. देन सर्वर इन्वेस्टिगेशन, सर्वर से भी हम लोग ईमेल को रिकवर कर सकते हैं. कौन से डिवाइसेस यूज हुए थे टू सेंड एन ईमेल, वेदर इट इज राउटर, फायरवॉल और स्विचेस, वी कैन इन्वेस्टिगेट दैट आल्सो. दिस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स and is used only when the logs of servers are unavailable due to some reason. When ISP or proxy does not maintain a log, or lack of cooperation by internet service providers, or failure to maintain chain of evidence. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप से, अगर एक टाइप से वर्क कर गया तो ओके, नहीं किया तो सेकंड, नहीं किया तो थर्ड. तो different techniques we can use to find out the sender of an email or to find out the device used by the sender. Software embedded identifier. Some information about the creator of email, attached files or documents may be included with the message by email software used by the sender for composing email. So sometimes they use different software or message composing tool that can be used. This information may be included in the form of custom headers or in the form of MIME content as transport neutral encapsulation format, TNF. Investigating the email for these details may reveal some vital information about the sender email preferences and options that could help client-side evidence gathering. The investigation can reveal PST file names, Windows logon, username, MAC address of the client computer used to send email message. The different tools and techniques we can use or to find out the IP address or MAC address or the devices related with the email sender. Sender mail fingerprints. Identification of software handling email at server can be revealed from the receiver header field, and identification of software handling email at client can be ascertained by using different set of headers like Xmailer or equivalent.
These headers describe applications and their versions used at the client to send email. This information about the client computer of sender can be used to help investigator devise an effective plan and thus prove to be very useful. The sender mailer identification fingerprints is not about is finding a new header which contains all the detailed information अबाउट द सेंडर। तो ये टाइप्स थी हम लोग की ईमेल की रिगार्डिंग। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हम लोग का ईमेल फॉरेंसिक टूल्स और कौन कौन से टूल्स इसमें यूज कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड नाउ, we have completed forensic analysis of email. Yes, now I conclude the session here and remember attendance is in the chat box. नहीं है तो मैं वापस सेंड कर देता हूँ। Yes, attendance is again in the chat box. It will be active for 2 minutes. Okay, please check the chat box. Attendance link is there and I'm ending the session here now. Thank you very much.